Hello children, today's video is for students of class 5 and today we will study English from the book Stream. आज हमरा Stream नामेर बोईटार थेके English पढ़बो। आज हम लोग Stream नाम के बुक से English पढ़ने वाले हैं. So today we will start from chapter number 2 which is in page number 9 and the name of the chapter is an equal share. चैप्टर का नाम है an equal share माने equal share माने की बोलबो equal भाग मतलब सेम समान समान भाग मतलब सेम सबके लिए सेम पार्ट. ओके. When I became the owner of a very small piece of vast continent of the earth, I felt very happy. It was a 2-acre plot with a coconut palm and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconuts was going up. And I was in high spirits and thought my trees laden with the fruits. Okay, तो क्या हुआ तब ये एक आदमी है जो कि बोल रहा है कि वो बहुत एक बार खुश हुआ था जब उसको एक 2 एकड़ का प्लॉट मिला था, 2 एकड़ का जगह मिला था जहाँ पे बहुत नारियल के पेड़ भी थे. মানে অনেক নারকেল গাছওয়ালা একটা যখন জায়গা একটা লোক খুঁজে পায় মানে কি ওন করে মানে পায় তখন হলো সেই লোকটা খুব খুশি হয় সেই জায়গাটা পেয়ে. But then the trespassers came. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो trespassers थे वो trespassers लोग आए. ओके. They ignored the fence we had put up और वो लोग इग्नोर कर दिए वो फेंस जो उन लोगों ने लगाए थे. फेंस मतलब दीवार, फेंस माने कोनो किछु बाउंडारी करा, कोनो बाउंडारी के फेंस बोले. और ट्रेसपासेस माने যারা কিনা মানে কি বলবো কারোর কিছু মানে তোয়াক্কা করে না, কারোর কিছু মানে पत्ता দেয় না. किसी का कोई चीज़ जो आदमी लोग पत्ता नहीं देता उन लोगों को ट्रेसपासेस कहते हैं. They did not seem to be at all afraid of my watchdog's शान. वो लोग उनका जो वॉचडॉग था उस वॉचडॉग से एकदम डरते नहीं थे. और जब बाड़ीते कुकुर छिलो সেই কুকুরকেও তারা একদম ভয় পেত না. It didn't look as if they would care about the police either. और उन लोगों को देख के लगता था वो लोग पुलिस से भी नहीं डरने वाले और ওইগুলোকে দেখে মনে হতো ওরা বোধহয় পুলিশও ভয় পাবে না. And so the first arrivals were of the birds and butterflies. तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया बर्ड्स लोग मतलब पंछी लोग और बटरफ्लाई लोग. সবার আগে প্রজাপতি আর পাখিগুলো এলো. Perched on the boughs of the branch of the trees, the birds chattered on and on. The butterflies fluttered around the courtyard, flashing their colors in the sun. And then there were crows. Their raucous cawing was harder to bear than the chirping of the other birds. फिर आया कौआ लोगों का जो आवाज़ था वो सुनना मतलब बहुत ही चुभता था कानों में. मैंने काकेदेर आवाज़ काने खूब लागतो. And what was worse, they missed no chance to swoop down the hens and chicks. तो वो लोग मुर्गी लोगों को जो उसके उधर मुर्गी लोग थे मुर्गी लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए खाने के लिए वो लोग हमेशा राज़ी होते थे. মানে ওরা মুরগিগুলোকে খাওয়ার জন্য মুরগিগুলোকে ডিস্টার্ব করার জন্য সবসময় এক পায়ে রাজি ছিল. The hawks who perched on the coconut palms were next to arrive, but while they sat on the higher places than the crows, the arcs of the movements were just low and hit the ground, swooped down, and was clear that they and the crows shared the same agenda while watching and waited. Nor were they alone. There were mongoose and bamboo bush. तो बहुत एनिमल्स आना चालू किया. मांगूज आना चालू किया মানে বেজি আসা আরম্ভ করলো, ইঁদুর আসা আরম্ভ করলো, কাক, হক এক ধরনের পাখিকে হক বলা হয়. কাক, হক, টগ এরকম মানে সব রকমের অ্যানিমাল এসে ভর্তি করে দিল. Even as I stood wondering what right all these creatures had to be on my land, there arrived a fierce creature with neither paws nor wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic. It hooted, spread, it hissed as if to ask me what business I had on the patch. Didn't it know
that I was the new owner. तो फिर आया एक कोबरा. तो इस कोबरा को मतलब ये जो नरेटर है वो कह रहा कि इस कोबरा को शायद पता नहीं था कि अभी नया ओनर इस जगह का मैं था. You had better leave my 2-acre plot at once, I said. But then, where it would be? Hadn't the whole world been taken over by human inch by inch? तब इसने क्या सोचा नरेटर ने कि ये कोबरा जाता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि पूरा दुनिया तो इंसान ने ले ही लिया था इन लोग से. At that point, my wife said, "Have you noticed the jackfruit has ripened? The squirrels and crows are feasting on it. Look at the guavas and the mongoose. The birds and the bats are eating everything." "But that's the beauty of it," I replied. "God has created fruits, roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth of light. Now we are the owners of the patch, true, but so are the birds, beasts, reptiles, and insects. What grows there is meant for all of us. We had better remember that at least some of the time." तब उस आदमी ने क्या कहा कि यही तो सुंदरता है इस चीज़ का, माने एटाई सौंदर्य. You are saying rats have a right as well, my wife asked. "They don't seem to think we humans have any. They act as if the earth belongs to them." तो उसके वाइफ ने क्या कहा, उन लोगों को देख के लगता है ये पूरा दुनिया ही उन लोगों का है, उन लोगों को हम लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है, तो हम लोगों को क्यों. "So we have made it our jobs to destroy the rats. How tragic that we might kill them so that so that we men and women can live undisturbed. We deeply need a new way which helps us to live without killing each other. At any rate, I had to taste for killing rats or anything else for the matter. But while that was so, I had to do something soon. But the coconuts, we need them. They formed a part of our daily food, and we had to find an answer." मतलब हम लोगों को अपने खुद के जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद के खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा. মানে ওরাই যদি আমাদের সব কিছু খেয়ে নেয়, ওরাই যদি আমাদের সব কিছু নষ্ট করে দেয়, তো আমরা কিসে বাঁচবো, আমরা কিসে থাকবো. আমাদেরকে নিজেদেরটা এবার দেখে নিতে হবে. সেটা ওই লোকটার ওয়াইফটা বললো তাকে. ওকে, দেন ইজ my wife forever was not looking for answers and decided to take things in hand. Not long after this happened, she went to the market. After 2 hours, she returned with many things. One of these were large tin of rat poison, which had mixed with bananas, rice, and tapoisia, and scattered on the patch. In 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats, and a cat were dead. तो इतने एनिमल्स वो चूहे मारने की दवाई खा के मर गए कुछ ही दिनों में. মানে 4 দিনের মধ্যেই সব মানে ইঁদুর মরার ওষুধ খেয়ে 4 দিনের মধ্যে 5টা মুরগি, 12খানা স্কুইরল আর 200খানা র্যাট এমনি মারা গেল, আর 1খানা ক্যাট. But the tender coconut kept falling. Everyone now accused the owls. A few months later, though, they found the real culprits, bats. It turned out that after dusk, huge bats arrived in swarms to flow the straight tree. They clung to the shell and knocked into them, beginning with the soft parts of working their way on the top. When they broke through the pulp, they sucked out the sweet, nourishing water inside. Then they flew away satisfied. "We must buy a gun," said my wife. तो उसके वाइफ ने कहा हम लोग को एक बंदूक खरीदना चाहिए बैट लोगों को मारने के लिए. द फॉक्सेस एंड द पोल कैट्स, मतलब बैड लोगों को, फिर फॉक्स लोगों को, पोल कैट्स लोगों को, इन लोगों को मारने के लिए एक बंदूक चाहिए. अ गन नेवर, आई सेड. गन शुड हैव नॉट बीन इन्वेंटेड. बंदूक तो एकदम नहीं लाना चाहिए घर पे, उस आदमी ने कहा. যখন লোকটার বউ বললো বাদুর মারার জন্য, পোলক্যাট মারার জন্য, শেয়াল মারার জন্য আমাদের বন্দুক দরকার, তখন লোকটা বললো বন্দুক তো একদমই নয়, ভগবান জানে কে ইনভেন্ট করেছে বন্দুক.
But alas, in a few days, my wife's cousin arrived with a grim-looked gun. I estimated that most thousands of coconuts were destroyed every day. He said, "Bats and pests, you know, but there is no use hooting bats there. Far away on the small island, there is an old temple. There are 2 banyan trees near it. You can see at least 3,000 bats hanging on the twigs and branches of these trees, and I am going to kill them all." तो उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने कहा कि मैं उधर हज़ार बैट्स है उस मंदिर के उधर बैनियन ट्री में, और उन सबका मैं मारने जाऊँगा. I prayed fervently, "Bats, oh my bats, fly away. Save your lives if you know what is good for you." And it happened. It was astonishing, a miracle. Bats were saved. My wife and her cousin returned 2 hours later. There was great fear on their faces. "We had a narrow escape," said my wife. It was good thing there were some houses around the temple. तो वो लोग जब गए उन बैट्स को मारने, वो लोग वापस आके बोले कि हम लोग बहुत मुश्किल से बच के आए हैं और आसपास कुछ घर था उसलिए हम लोग बच पाए. তো ওর ওয়াইফ আর যখন ওর ওয়াইফের ভাই ফিরলো তখন কি বললো তারা? বললো যে আমরা খুব কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে এসছি, খুব মানে চাপে বেঁচে এসছি, কয়েকটা বাড়ি ছিল বলেই আরও বাঁচতে পেরেছি. There were about 100 of people at the temple when we arrived there, and they surrounded us in minutes. They looked menacing. If we killed bats, they said they would kill us. They believed that bats were the souls of their ancestors. तो उन लोगों को लगता था कि बैट्स उन लोगों का पूर्व पुरुष जो लोग थे, उन लोगों का दादाजी का पापा, ये लोग उन लोगों का आत्मा था, और अगर वो लोग उन लोगों को मारते तो वो लोग इन लोगों को मार देते. তো মানে ওনার ওয়াইফকে আর ওনার ওয়াইফের ভাইকে ওখানকার লোকেরা বলেছিল মেরে দেবে যদি তারা একটাও ব্যাটকে মারতো. I made up my mind at that point. Bats are not our ancestors, I said, but they are among God's mid-rate creations. Let them have the coconuts. We shall have what's left. After they have enjoyed their share, let's be happy with that. All creatures that eat coconuts have right to them, and all living beings have equal share in earth. তো সারে লিভিং বিইং কো সব কুছ ইকুয়ালি মিলনা চাইয়ে. সব লিভিং থিংস আমরা সব কিছু আমাদের রাইট আছে, সব জিনিস আমাদের পাওয়ার. সো স্টুডেন্টস, হিয়ার ইজ where the chapter ends. The story is written by Vaikam Mohammad Basir. ये स्टोरी वाइकम मोहम्मद बसीर ने लिखा है. गल्पटा वाइकम मोहम्मद बसीर लिखेছে. Study the chapter well. If you have any doubt, do ask in the class group. Thank you.